Hello students, welcome back to my YouTube channel Shelly Mittal Science and Maths Classes. Today I am starting with chapter 1 of class 6, Food, Where Does It Come From? We will start reading today. Students, you can open your books side by side, or you can first see my video, then you can read from your books. Let's start. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? And I think its answer is no. इसमें हमें ये पूछ रहे हैं कि हमने आज घर पे क्या खाया, या हमने कल क्या खाया था, या हमारे दोस्तों ने जो भी खाया वो सब सेम, क्या वो सेम होगा? नहीं, वो सेम नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? Next topic, let's start. Next topic is food variety. Means what type of foods, and each and every food we eat has different ingredients in it. So students, let's start with the activity. Students, first of all you have to make this table like this in your copies. You can take screenshot of this activity. I have made activity 1 and 2 collectively. In this activity you make a table, and first column of which is name of your friend. Next one is your what food your friend ate today or yesterday, and what are the ingredients in that food. मीन्स आपको अपने किन्हीं भी कोई पांच दोस्तों से पूछना है कि उन्होंने क्या क्या खाया भोजन में आज या कल, और आपको उस फूड आइटम्स को सेकंड कॉलम में नोट करना है. थर्ड कॉलम में जो भी फूड उन्होंने खाया है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. अगर उन्होंने दाल और चपाती खाई है तो चपाती के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? आटा, व्हीट फ्लोर. और दाल बनाई तो दाल के लिए क्या हुआ? रॉ दाल हुई, उसमें मसाले डाले हैं या वाटर का यूज़ हुआ है, वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं. सो यू हैव टू मेक दिस टेबल. ये टेबल बनाने से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इंग्रेडिएंट्स का नाम पता चलते ही आपको ये इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि वो इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलता है. एज द नेम ऑफ आवर चैप्टर आस्क, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. The main source of our food are plants and animals. When you come to know about the ingredients, you can easily find that the main sources of our food are plants and animals. हमें अपना ज़्यादातर भोजन plants और animals से ही मिलता है. So now read the activity. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. Students, there is a lot of variation in food items according to the region. In north, south, east, west, in every region there is different food items, and you can say ingredients, some of ingredients are very similar. I think most of the ingredients are similar, but the food items are different. So you can see here table 1.1, what do we eat? I already told you to make this table. Look at the picture, figure 1.1. Different food items are shown in this picture to you. There is dal, chutney, chawal, roti, fish, everything is there. So variety of food is there. Let's start reading. There seems to be so much variety in the food that we eat. You can see figure 1.1. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. आप सभी के घर में चावल बनते हैं. चावल बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल के लिए सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, एक कच्चा चावल और दूसरा वाटर. ठीक है. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, and so on. Okay students, you can easily understand this. When you note down the activity and name of your friends, do the activity, you can easily understand this chapter. Activity 2 is choose some of the items you listed in the table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. आप अपने घर में friends
की जगह अपने घर के बड़ों का भी नाम लिख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या फूड आइटम्स खाई. Add some more items to this list. Like, see this table 1.2 food items and their ingredients. रोटी और चपाती, इंग्रेडिएंट्स क्या हुए इसमें? आटा एंड वाटर. सेकंड इज दाल. दाल के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या यूज होते हैं दाल बनाने में? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस. So you can easily understand the food items what we eat, where does it come from. That's all for today's topic. We will see you tomorrow with the next topic. Bye.